Hi Arvind, good afternoon. Hello, sir. Good afternoon. How are you, sir? I'm good. How are you? I'm good. I'm good, sir. Okay. Thank you. Thanks for joining. Thanks for your time. Okay. Thanks for your busy schedule. So finally we met today and like those who are watching this video. So today, as you know, that tagline we mentioned that Uncut Podcast with Ranjan Sir. And today we'll meet our, previous student who are like recently, not recently, last 2 year, he's joined into AVP Assistant President into Wells Fargo as a data management, data governance, data analysis roles. Today we'll discuss with there's a uncut, unfilter, without any hesitation, without any second thought. We'll discuss completely the roadmap how Urban was a 10 year into complete a different non-technical, not a no background into related to programming or a technical background. Now he's how he got a job in Wells Fargo as a AVP, Assistant Vice President, and how he's surviving last 2 years. Most of people are thinking, okay, I'm non-technical. I have a 5 year into different domain. So the details we'll discuss completely. So finally, Arvind, thanks for joining. Thanks for your Yeah. time. So I just like not already I know people who want to those who are watching this video or they're watching this podcast they can they want to know the like your introduction. Yes, sir. So, what I'll start so basically, I completed my BTech in 2011 in electrical branch, and after that, I joined a Navbharat Limited. It's basically a core company, and basically it's a plant. So there I worked around 3.5 years. After that, I got selected in Wapcos Limited. So it is a PSU PSU sector, so Government of India organization, and uh, there mm, like my served around 7 years. So yeah, like after that, like as I was my entire career was on core branch and a non-technical side. So to I try to grow myself. I try to build my career in a different way. So I joined Data Gyan. I heard so many of organization, but I uh, really thought that because in a Data Gyan, Ranjan Sir provided good knowledge sharing session. There's just some group discussions were happening in that in the during the period of the study, but and also whatever Ranjan sir explained that clearly to the basic level things. So that's after that, like I want to join. I really like to join Data again. That's the main first reason. And yeah, so I joined Data again. So after I completed my Data again course in during your 4 to 6 months. So after that, I got I try myself so hard. I have to learn more things because as my career was from a different background, with different non-technical, totally non-technical, and I have to come with good skills and to compete the interviews and crack the interviews. Mhm. So yeah, Yeah. so uh, it takes some time, for a non-technical person uh, uh, coming into a data data thing Roles. Yeah. and Yeah. data role, and yeah, and coming into a IT sector, it's not so easy. But yeah, if your fundamental are okay, uh, if your basics if it is good, then you can crack anything. So that the main thing I learned in the data gain part. Yeah, it takes 6 months to crack a job. Yeah. So Yeah. that's yeah. So, frankly speaking, sir, I already like.
Before to Wells Fargo, so I take it takes 45 interviews. Yeah. That's good. Yeah. Even I remember when I was attending interview, when I was searching in fresher, that time it took on 1 year for Yes, me. sir. Most of people don't know Ki Ranjan sir, how he's become a teacher, how I'm working today as senior manager into data roles. So most of people thinking, okay, we generally not started. So that when you attend the interview, the experience, the fail, that the Yes, sir. struggle, what you learn, that is going to see. It's getting a job is not a difficult task. How you're growing your career, that is matter. Correct, sir. Because Correct, sir. if you see now the 2 year back when you started your complete non-technical profile, complete, you never worked any programming, any technical. You were working is a it's a semi-government office. There is no computer, there is no laptop, there is no office. You were working a electrical field, and you moved to a world prestigious organization. That is called which company? Wells Fargo. So that Wells Fargo, yeah. working such a prestigious company, and it's not about the job, how you are working and how you are surviving, that is matter. Everybody, those who are Yes, watching this video, most of people are thinking, okay, fine, if you get a job, is difficult? Yes, difficult will be there, but it's not about only urban. There is 1,000 people. They are transition from data again. They're completely from teacher, non-technical background, school, professor, they are surviving. So that's required. So initially, when you attend interview, initially when you are struggling, it is not about your struggling. It's like how you're preparing that will help you in the future. So yes, how, definitely, sir. Definitely, yeah. sir. So now everybody, thinking, so when you were not never worked 10 year, okay, or 8 year, you were never worked. So now you enter into such a big company with such a, AVP role, assistant vice president in data roles. So how much you really challenges? It's been 2 year. It's not about you are enter today. It's been two Yeah. year you're working. How will be Yes, sir. defined those who are watching? Yes, sir. So the thing is that challenges are coming, but the thing is that if you are strong in your mentally and if you like I can remember those days like when during our courses like you are course so you mentioned that if you mentally strong enough to know to crack the interview and get into the job, then you can achieve anything. So yeah, that's always there in my mind. And also during in this 2 years, so few more challenges are coming and going, but yes, I tackle very well. And due to the knowledge, whatever I gained from you, sir, that matters a lot to me because now I worked, but last 2 years in Wells Fargo and as a as a senior most role in the organization, and yes, it's going good. It's going good, sir. Okay. And the skills what you learn, from maybe, in data again platform, that is sufficient to survive any company. Yeah, additionally, you added anything while, after joining company or before joining companies. So the whatever course like in our in the data again basically like I learned SQL, Excel, Tableau, and the Python skills. So these are the main tools technology which are going in the market for the data perspective view. But yes, there's so many tools and technology that you have to learn after that when you joined any organization or any company like as per their requirement or for your career growth you have to learn more things and you have to build yourself, but prior to that I must say for a getting into a organization you have to more skilled yourself in those uh, data related skills like SQL, Excel, Tableau, and Python. These four are most important, and like I must say, these four are the pillar of the data, basically. Okay.
So now few more question we'll discuss, you know, we'll not talk about data again. We'll not talk about Wells Fargo. We'll not talk about like anything right now. We'll just talk about how is someone like if you tell tomorrow, anybody ask you or today ask you how to start. Like there is so many things in market. Like people are taking okay 1 year course, 2 year course. There is 100 tools available. What Mhm. exactly you said like before joining Wells Fargo, I attended around 45 interview from Data Gyan platform. In 45 interview, you must have great experience, correct? Yes. To how exactly industries work. So what exactly some people are thinking okay these are the things required. Some people telling SQL required. Some people telling Python required. Some people are telling R required. Some people telling SAS required. How will define yourself? How will suggest to others? What is your experience? Sir, during those 45 interviews, like most of the interviews, they are saying that have you knowledge on Hadoop, Hive, or any other tools, like as per their requirement. So it is not basically like a particular tool, but the thing is that if your basics are strong for the in SQL, in Tableau, or or Python, then you can crack. I think you can crack most of the interview. But the thing is that you have to more skill like groom yourself, like in a technical side as well as in a mm, communications also, like your personality, and also you have to brush yourself to groom more on those skills. Like as I mentioned that the pillar of the data, like these four skills most required. But there are so many tools, so many technologies are there for related to the data. But most of the part are basically questions come around SQL, like Tableau and Python related questions. Okay. One My interview yeah I faced like yeah yes, sorry, sir. yeah So please. one interview I faced like it hardly 10 minutes. Like they asked me, have you just tell me yes or no. The answer should be in yes or no. Like they asked me like 15 tools. Mm. You have this of knowledge or not? So I really don't have knowledge on that. So I tell that I already mentioned them to like uh, give me some like if I'll get a chance, then definitely I'll work on that if I'll get an opportunity on this. But yeah, I got rejected on that. Okay, my next question, like everybody's behind the technical things like SQL, Tableau, Python, SAS, Java. If you want to your point of view, like how much percentage, like if you're telling three categories, one is this technicals, second is preparation in the sense like your background, your domain, and and your like what do you call the business skills, and third one is like how you are dealing with that question. So how much percentage will give skills out of 100, and how much will be preparation in your domain skill, how much you prepare, how to deal that question. So skills must matter a lot because you have to like as I was in a non-technical side before to in the before to Wells Fargo, like so I have to learn basics first. That you all in the data gain course, the basics things you clearly explain very well. That one thing. And yes, skills matters a lot because in the rating part basically I'll But give. my question is, most of student thinking, okay, if you learn Python or SQL, I can get a job. How much it is a reality is there? Can So anybody, without a skill, they can get a job or not? My question, like if they learn only Excel and they can learn only any particular tool, they can export and they can start an interview or get a job. They'll get it not. so they can because Yeah.
uh, for any particular tool like Excel, yes, Excel is the first data tool in the market because every company work in the Excel part, but you have to more skilled in the When Excel I part. know from your company, Wells Fargo, there is a 30% of employee only working Excel. Yes, And sir. Yes, sir. Yes, I sir. know from your company, people Not are only only working Excel, they're getting 50 LPA. yes, sir. Okay, Yes, sir. even Yes, more sir. than that, I know. But Yes, sir. when Because in outside this pressure, the fresher are thinking, okay, if you learn Python, R, SAS, statistics, AI, cloud, everything I will learn. Okay, in same times, if you go to JP Morgan, Wells Fargo, my student even joined there, including you. They're working only Excel, they are getting more than 250 LPA. yes, sir. But in Yes, sir. same Yes, sir. time, other candidate fresher, they're telling, I will learn 1 year, I will learn all the things, but they are finally joining any non-technical jobs. That is the that is the sometimes the reality some students are challenged. No, the thing is that yes, yes, sir. So the thing is that they are not aware about the reality of the companies. That's the main reason because most of the companies are working in the Excel part only, like Yeah, for the data, to get the data and to cleaning the data and some filtering work and some calculation, the formulas. Most of the work like in the Excel only, sir. But few of the part like for the data extraction from the raw data set from the database to connect with the database side. So that time you have to skill yourself with the SQL part or into the Python scripting part. And for after getting those filter data to convert into a visualization manner to get more understanding with the data that you must to learn Tableau or Power BI on that because for a visualization we have Tableau and Power BI tools to use day to day like uh, presentations or any stakeholders discussion or any management related discussion. So yeah, that a tool must required. But most of the companies are like as you already mentioned that they are working in Excel part only. But yeah, yeah, see, there is no doubt. See, that all the cloud tool is coming is nowadays. Even the mm, data governance is there, and some part telling that AI is there. It's no doubt. Even talking about nowadays, most the YouTube you can see or the post people are just simply posting okay, reap Excel, reap RIP, reap PowerPoint. It is how much no, no, you sir. can you be tell about the audience they want to say okay it is like dead, Sir, Excel is no, dead, no, no, PowerPoint sir. is dead. How These are much is true? What is the reality of that? Can you be you were working as a such a reputed organization and working in such a Wells Fargo जैसा कंपनी है, आप इतना हाई पोजीशन में हाई पैकेज भी मिल रहा है, ये लोग जो यूट्यूब में बोलते हैं ना कि यार यू डेड हो गया एक्सेल, डेड हो गया रीप, नो, नो, इसका नो, बारे में सर. थोड़ा कुछ बोलिए। सर अगर मैं वही बोल रहा हूँ अगर इफ एक्सेल गोइंग टू बी डेड देन माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग टू आउट सर. करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाएगा सर. माइक्रोसॉफ्ट का मेन काम ही है एक्सेल को हैंडल करके उसको. सर नॉट ओनली वन कंपनी, एवरी कंपनी इन आईटी सेक्टर दुनिया एवरी में ऐसा कंपनीज है. कोई भी कंपनी कोई बुलाओ, भी कंपनी, कोई भी कोई कंपनी भी नहीं है जो कंपनी एक्सेल नहीं बोला यूज कर रहा है. जिसका लैपटॉप में एक्सेल नहीं है। दुनिया में एग्जैक्टली ऐसा सर. कोई भी कंपनी है जहां पे बिना पावर पॉइंट प्रेजेंट में काम नहीं होता, शायद मे बी दे डोंट हैव ए सीक्वल, डोंट हैव ए पाइथन, डोंट हैव आर और सास, यस. दे मस्ट हैव ए पावर मस्ट पॉइंट, हैव दे एक्स. मस्ट हैव ए एक्सेल। और ये नहीं यस. जाने वाला है। ऐसा नहीं कि ये नहीं जो लोग सर. बोल रहे हैं कि एआई चैट जीपीटी एआई खत्म कर देगा, ये इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। यस, दैट इज कमिंग टू हेल्प यू। ऐसा नहीं यस. कि यस. एक्सेल में जो हमने जैसे कि माक्रो आप लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं और पावर पॉइंट बना रहे हैं, उसको आपको हेल्प करेगा। ए इज नॉट योर एग्जैक्टली. एनिमी और नॉट गोइंग टू रिमूव एनी, इट इज इट इज लाइक It's a एक्स्ट्रा tool माइलेज। basically helping you a good understanding like if you are stuck any point or anywhere. So using chat gpt or any AI tool you can get help from there, but most of the time you have to work in the Excel
ओ, And for ये अपना एक presentation. ये शाहरुख खान का एक शाहरुख खान जी का एक डायलॉग है। वो बोलता है पहले सक्सेस हो जाओ, बाद में तुम क्या बोलते हैं, एडवाइस दो। तो यहाँ पे ना लोग क्या करते हैं कि पहले जॉब तो कर लो एक बार, नाउ यू एंटर टू Exactly. इंडस्ट्रीज, वर्क ऑन दैट, एक्सपीरियंस करो कि ये कैसे काम होता है, उसके बाद चैट जीपीटी आता है आपको हेल्प करने के लिए। Yes, पहले yes, बिना definitely, शुरू definitely. करके आप बोल रहे हैं कि अरे एआई आएगा, चैट जीपीटी को पायलट आके ले लेगा सब कुछ, तुम्हारा एक्सेल को, पावर बीआई को, टैबलो को, ये ऐसा नहीं होता है। पहले तो देखो क्या है। अ, तो Correct, correct, पहले sir. एक्सपीरियंस करो, उसके बाद का सुनो किसका। ये आके Mhm. कुछ नहीं होने वाला है, कहीं कहीं कुछ नहीं जाने वाला है। ओके, सो एवरीथिंग इज देयर, बट इफ यू टेलिंग इट इज कमिंग हेल्पिंग टू यू, योर जो Yes, जो काम है ना, जो 10 मिनट काम है वो 2 मिनट कर सकता है, बट वही रहेगा। इट इज गोइंग टू मोर प्रोडक्टिविटी, जो काम yes, है ना yes. तरीका बदल देगा थोड़ा, और आपको Correct, इजी sir. हो जाएगा। दो जो Mm. थिंकिंग यार प्रोग्रामिंग, हाँ यस, नो नो डाउट, लाइक इफ यू रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो हमारा फेसबुक का फाउंडर है, व्हाट इज टेलिंग कि सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड द प्रोग्रामिंग रोल जब चला जाएगा, देयर इज नो डाउट, इट इज जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज सी, देयर इज अ डेवलपर विल बी देयर ऑलवेज, ओके, but Yes, sir. the like he, when the 10 people they're working the programming, writing the code, scripting, taking to deployment and the delivery, in same time one or two people will require, because remaining the programming code will be automated Yes, by yes, AI. Okay. yes, sir. My next question to you, Arvind, like he, now you recently added into data governance role. What is your opinion? Those who are like watching this video, they want to make a career. Like what is data governance, data quality, how it is work, when someone will start. Like suppose I'm working in Java or working sales or marketing or a teacher, should I directly jump to data governance, or should I first go to how data analytics on top of data governance? Can you bit elaborate, or can you help me on that? Because you're working as a data governance part of as a AVP. Yeah. Yes. So the thing is that first you have to scale yourself with the data analytics part. Because if the data analytics is not clear, if you are not uh, get to know what is data analytics, what is the use of the data analytics, and how you are going to be use the data analytics part, then you cannot going to be the data governance part. Data Like governance. you can, but Yes. it will not help you more on that part. Before to that, if your knowledge in the SQL, Excel, Tableau, or any Python related things to the data analytics way, then it will help you a boost to your career into the data governance part. Obviously, data governance is the most uh, important for the organization, like in a banking sector or any insurance sector or any other sector. But the thing is that data governance is most important because every company want to secure their data. They want to control their data. The data should not be any should not be like leak from any companies to the other side, and that's why they are using the data security part. And the quality of the data should be maintained, like for any organization they want to like maintain the quality. And also mm, uh, Yeah. yeah, Even so yeah. those things are coming under the See, data same thing. governance thing. How, see, when data management is there, data Yes, analytics and data governance will come. yes, They correct, building correct, a sir. data management. Wells Fargo Correct, is sir. known for building a data management. Yes, They sir. to managing the data, we need a analytics tools like Yes, SQL, Tableau, Power correct. BI, Python. These things required Yes, to sir. improve what data is there, and you managed, and on top of you want to improve that data quality. That is why nowadays you are adding what data quality, all the rules, regulation, compliance, GDPR, HIPAA, Yes, sir. all the things is coming.
So the Yes, sir. Correct. data governance also many things is there. Data governance, data quality, data privacy, data security, data Security. lineage. Many things is there. Even how Yes. the people break down into data carrier. Initially, when we started 2010 to 12, that time nobody know about the data profile. They're talking about only data analyst. Slowly they started into breakdown into data science, business analyst, data reporting analyst, BI analyst, then started developer, Tableau developer. So that split it. Similarly, data governance is a very big things. Yes, Okay, sir. Correct. so you should know where to start, how to start. It's not about the course. Even the tools also market. There is a 10 plus powerful data governance tool is there. Atacama Mm. is there. ICP 40 is there. Data governance. Even you told that Wells Fargo is in-house data governance Yes, project sir. is Yeah. there. Yes, sir. So many things. Anybody want to start, it will be very tough to where to start. Most of Yes, sir. student data can they are coming, sir. I done 1 year course. I learned so many things, but I don't know how to start, where to start. So that Exactly. is why your things should be ready-made. Okay, it's a Yes. plug and play. Mm. What is called filter. We are spending a lot of time making filter, and we are giving what exactly need now. Okay, so So data the thing is that governance. if Yeah, the data is not there, if the correct data filter data is not there, then how will going to secure those data? How will correct, you come into the governance part? Yeah. correct, So for that reason, data analytic is the most thing because no, the management or the stakeholders they don't want to see the raw data side, the uh, correct. huge data. They just want to see the proper data, filtered data, and the mannered data, like in a visualization manner. Nowadays, Yeah, we are uh, they want to mostly they want to see in a visualization manner, if in a presentable manner, so that they can understand the most valuable thing, like if the company is going in a loss or in going in a profit side, or which part is going down in this year. So how will improve those things? So that comes in the analytic part. After the analytics is completed, then governance start. Like if the data is properly analyzed, properly in a manner, then you can govern those data. You can govern in a in the even security in the even quality you might manner. be see nowadays, that earlier last 10 GDPR is there, even more than that. GDPR is there, European country they're running. For Australia, there is APRA rule. If you're telling USA Yes, healthcare, that is healthcare rules, and the country in Dubai recently, if many students like 4 to 5 students recently they joined into Saudi Arabia the so the, project. They are working data governance. So it's not about again now people will start it giving training in data governance. But first you understand where to start, how to start. Everybody starting okay. They hire the people. It's okay. Somebody has a Python in expert, they can teach. Okay, but as somebody someone is fresher or non-technical like you previously working 11 year or sorry 8 to 10 year, you want to learn that the way need to teach. It's not yes, about correct, I sir. know Python, I'll deliver you. How it will work? No, the No, sir, thought, no, the brain need to definitely not. connect based on Yes. that. And it's not about only technical, the how you are preparing resume, transition discussion, the way need to work, that many things is required. All right. Yeah. So yeah, so data governance, if you today is 2025, if somebody want to make a career 2030, what is the roadmap? How will you suggest to the audience? So, like as I already mentioned that I was previously I was in a non-technical side, and so for a non-technical person or any fresher, so they must learn the skills, technical skills related to like data, like SQL, Excel, Tableau, or Power BI, and for advanced person like Python or in AI tool. So this is the most important thing. First, they have like, mm, and also the most important part is the basic knowledge. They should uh, completely not involved into the like coding. Yes, in the SQL we can start with the select start from where having clause, like not like that. We have to know what is the select function, what is the use of the select function, why you are using that, what is the use of
having clause, where clause, what is the difference with the rank function, what is the like different type of schema tables. Those things need to be understood first. So that the main point. Like I want to say that before you going to start a in a journey, so you have to uh, uh, the basics should be clear first. Then you can start writing and brush up yourself, and then you learn more things onto that. You can also इवन uh, आपने सुना होगा अभी रिसेंटली हमारा इंडिया का जो डेटा गवर्नेंस का रूल आया है, क्या है रूल? वो डिपा डिपाई, ओके, द डिपा okay. डिपाई recently the India government, cabinet recently they introduced data governance, data collection, data management, Mhm. even if you comparing our syllabus is very very fit for if you, any other institute or any other institute in the India data Gyan course syllabus, if you match with the all the State Bank of India, Reserve Bank of India, the hiring the data governor, data analyst role, I think हमसे कोई best profile मतलब syllabus नहीं बनाया, because we are working on that right now. Yes, yes, correct, sir. Many our faculty are working in the Dell, Oracle. Our faculty working in a bank, Australian bank. Our faculty is working in a Cisco Corporation. Our faculty is working in Deloitte, Citibank. They know exactly how it is working. And same times, we Yes, sir. all the faculty not only working, we are teaching, we are working with the student, working with the industries, working with the the education platform. We are helping, guiding that what should be syllabus. So it's not about to how much you are learning technical, how much you are preparing based on the indices. ये Yes, ये बहुत मैटर करता है, डेटा गवर्नेंस correct, इज sir. द Correct, sir. नेक्स्ट बिग थिंग इन अ मार्केट. Okay, so Yes, anybody who want to make a career, they should first learn analytics. They learn, yes, data. They understand the data. They understand the enter to industries. They can start it. But directly, जैसे कि पहले क्या हुआ था ना, जो भी कोर्स शुरू हुआ ना 2010, I remember. Then Tableau tool came, Power BI came. Nowadays, everybody, hey, I want to learn Power BI. I want to only Tableau. How it will work? It's okay. It will work. It will take you 1 year, even more than that. It will struggle. It is like, incomplete things. Anybody yes, want correct, to sir. start Power BI tablet, they must have to knowledge on SQL and Excel. Without Yes, that, you correct, sir. can do. Nobody is stopping. You can do it, but you must have a knowledge. If anybody know SQL and Excel, the fundamental, at least they can directly jump and work in Tableau. But Yes, anybody correct, sir. Correct. take a training 6 months without knowing SQL Excel, they cannot even survive. They will Yes, correct, always sir. scared. That Obviously, is the reality. because during filtration part, you have to use the SQL and Excel. Yes, we can do that in the Tableau or Power BI, but not like I'm not saying that in an properly, but you have to struggle a lot in that part. But yes, the fundamentals should be clear on that before to like any visualization tool. The market down, सब लोग बोल रहे हैं कि market down, there is no, job. What do you say about on that? Your सर point मुझे of तो view. You are always connected with the industries, correct? आपने तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू, मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूँ. सर अभी अभी भी मेरे पास कॉल आ रहा है. अभी भी मतलब in this week I attended a 3 interview. Previous week में 2 interview attended किया. Almost in this month also, in January month, data again around 10 to 15 student already got. Even today right now I'm talking, one is he got in 2 company, only 1 or 2 student today got already placed. Today I got a call in Saturday also. So Mhm. there is always company, there is always job, there is Yes, sir. always an interview. Always, always, जो always, sir, बोलते हैं always, ना sir. कि हिंदी में, जो ढूंढने वाला को भगवान भी मिल जाता है, ये लोग Exactly. कुछ लोग ना यूट्यूब में बैठ के पूरा तेज नेस कर रहे हैं मार्केट को. नहीं नहीं जॉब सर, कुछ नहीं नहीं है. है, जॉब नहीं मिलेगा, एआई मार डालेगा, सबको खा लेगा. पता नहीं, तो व्हाट दे आर टेलिंग, डरा रहे दुनिया को, आपको एक ही जॉब चाहिए, करेक्ट? You Yes, need sir, a correct, one sir. job. You see One job. yourself, you are like a 10 year. आपने सोचा भी नहीं था कि यार जॉब कैसे मिलेगा. 10 साल आपने नॉन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ऑफिस में काम किया. आज वेल्स फार्गो जैसा कंपनी में जॉब कर रहे हो, दैट विल बी एबीपी रोल. एंड डेटा गवर्नेंस, डेटा क्वालिटी में आप मैनेज कर रहे हो, और 2 साल हो गए सर्वाइव कर रहे हो विदाउट एनी चैलेंजेस.
और ये जो लोग पीछे बैठ रहे हैं यार, जॉब नहीं है, मार्केट डाउन है, ऑफ कोर्स जो लेजी है, जो मेहनत नहीं करेगा, उसको हमेशा ही दूसरों का सुने करेगा। खुद पे भरोसा रखो, करेक्ट, करेक्ट सर। trust yourself, work on that, improve the skills. Okay, understand the, make a good faith on wherever you do, whatever you do. That trust is required. If you're watching, talking, market नहीं है तो क्या करना है? अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, डेटा आईटी जॉब नहीं है, डेटा करेंगे क्या? फार्मिंग तो नहीं कर पाएंगे आप। फार्म तो नहीं बनना है, आईफोन परचेस करना है आपको, बंगलो तो लेना है आपको, करेक्ट? इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, पैशन तो रखना पड़ेगा। और कुछ यस है यस। ऑप्शन पास? नहीं नहीं, करना कोई है तो ऑप्शन नहीं नहीं। है तो उसमें काम करना है चुपचाप, क्यों लाखों लोग सर, का बात सुनना है? सर करेक्ट। मुझे आज भी याद है द फर्स्ट डे ऑफ आवर कोर्स ड्यूरिंग जो आपने एक बात बोला था कि फेथ ऑन मी, फेथ ऑन यू, टू थिंग्स। मेरे पर भरोसा रखो और अपने पर भरोसा रखो, यू विल गेट अ जॉब। कि सो देखो, या। मैंने जब ये शुरू किया था जब, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स कुछ लोग हमेशा रहेंगे, बात करेंगे, आपको डराएंगे। करेक्ट। आपको हमेशा डराएंगे, बैंगलोर में जॉब नहीं है, इंडिया में जॉब नहीं है। ओके। आपको परसेंटेज नहीं है, आपका कैरियर गैप है, आपको हमेशा डराएंगे। मेरा सेम टू सेम हुआ था, मेरा भी परसेंटेज नहीं था, मेरा 2 साल गैप था, मेरे को कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला था। आज देखो, आई एम सीनियर मैनेजर इन वर्ल्ड टॉप कंपनी में, मैंने काम कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। और आज का डेट में मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट भी दे रहे हैं, मेरे स्टूडेंट को जॉब मिल रहा है, मेरे को जॉब मिल रहा है। कहाँ है वो लोग जो बोलते हैं कि जॉब नहीं है? ओके, आज का डेट में न्यू ईयर का डे में भी 2 लोग का जॉब मिले था। और सबसे बड़ा बात है, वो इंजीनियर लोग यूट्यूब में वीडियो बना के बोल रहे हैं जॉब नहीं मिलेगा। एंड सबसे द बेस्ट एंड द ब्यूटीफुल अबाउट डेटा कैरियर, those who are like most like working, like those are like homemaker, कोई घर में कोई बेटी गांव में बैठकर वो जूलॉजी पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, बीए पढ़े, स्कूल टीचर, बीड है। आज देखो वो डेलोइट, इंटेल, ओराकल में जाके हम्म। 15-20 लाख का पैकेज कमा रहे हैं। और ये लोग यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में वीडियो देखते हैं कि यार जॉब नहीं है। अरे जॉब क्यों नहीं है? जो टाइम में, हमारा टाइम में, मतलब 2010-12 का टाइम में, डेटा एनालिस्ट का कोई डेफिनेशन किसको पता नहीं था। यस सर, करेक्ट उस सर। टाइम से हम शुरू किया है, उस टाइम से भी हमारा स्टूडेंट है। हाँ, तो आज का डेट में भी वो उनका वाइफ को भी रेफर करते हैं कि जाओ दे, उस टाइम में 2010-12 आई एम टॉकिंग अबाउट, पीपल आर, यू नो ओनली, हम लोग का जो डेटा ज्ञान का सिलेबस था ना, वो जो आजकल बोल रहे हैं ना, हम नंबर वन इंस्टीट्यूट, ये वाला इंस्टीट्यूट, 6 6 लाख का कोर्स फीस, 4 लाख का कोर्स फीस, कहाँ है वो लोग? वो अभी आए हैं। हमने 2010-12 से शुरू किया था इसको। और वहाँ उस टाइम से ना 1 ईयर का कोर्स था, सॉरी 1 मंथ का, अभी हम्म। 4 मंथ का कोर्स। समटाइम्स सम पीपल आर टेलिंग सर 4 महीने में हो जाएगा क्या? मैं बोला 4 महीने क्या, 4 दिन में भी जॉब हो सकता है। जॉब तो हो यस सर, सकता है, करेक्ट। वाई 4 मंथ? बिकॉज मेकिंग ए अंडरस्टैंड द कंप्लीट पिक्चर। और जानने के लिए एक लिमिटेशन होता है, मतलब करेक्ट। सरवाइव करने के लिए पहले। जानने के लिए तो अनलिमिटेड है, जैसे कि आप डेटा एआई पढ़ेंगे तो 2 साल चला जाएगा, और करेक्ट सर, पाइथन करेक्ट। पूरा लाइब्रेरी पढ़ेंगे तो वो ये 2 साल चला जाएगा। तो कितना करेक्ट पढ़ेंगे सर। आप? बीटेक पढ़ लिया, एमटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बायोलॉजी स्टूडेंट गांव में पढ़ के डेलोइट में ज्वाइन कर लिया 30 लाख का। यही है रियलिटी। तो इतना सुनना नहीं, आपको एक ही जॉब चाहिए, यू नीड ए वन जॉब, करेक्ट? करेक्ट सर। इतना सारा नेगेटिविटी, इतना सारा चीज, जैसे कि बहुत सारा लोग आजकल में बड़ा ट्रेंडिंग होता है, दे दे आर वेरी, मार्केटिंग टीम, पीआर टीम, पता नहीं वो सब क्या क्या टीम होते हैं, हमको भी मालूम नहीं। ओके। ये टीम बैठ रहे हैं, मतलब पता नहीं, बहुत सारा इंस्टीट्यूट ऐसे ही कर रहे हैं आजकल। तो हमने जब भी शुरू किया था ना इन लोग का मतलब वो लोग, पता नहीं, डेटा साइंस का पैदा नहीं हुआ थे वो लोग, जानते नहीं कि डेटा साइंस क्या है, उस टाइम से क्या कर रहे थे। तो वी नो इंडस्ट्री व्हाट एग्जैक्टली हाउ वर्किंग। 2009 में जो रिसेशन था, उसके बाद बोले जॉब नहीं मिल रहा है। देखो, हम उस टाइम में भी सरवाइव कर रहे हैं, ये लोग जॉब भी कर, एक दिन हो गया हमने नहीं बैठे, नॉट ए सिंगल डे। ओके। सर पर जो डेटा, देयर इज नो रिसेशन, बिकॉज हर दिन हर कंपनी को डेटा चाहिए। तो डेटा में तो कभी भी से रिसेशन नहीं होगा। हाँ, बाकी अदर कुछ उसमें आ सकता है, जा सकता है, इट्स नॉट अप और अबाउट डाउन हो ओनली सकता है। डेटा। दुनिया में कोई भी चीज करो ना, किसी को भी ढूंढो,
वो आपका एग्जैक्ट। सक्सेस मिलेगा। नहीं वो तो सही है, ये करेक्ट करेक्ट तो सर। लूजर माइंड सेट है, जो बैठ के यूट्यूब वीडियो देखेंगे, बोलेंगे कि ये डाउन होगा, ये अप हो गया, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, और अब ये डिस्कशन भी हुआ था ये इंटरव्यू में। ओनली आप एक्सेल पढ़ेंगे ना, 30 लाख का पैकेज 3 ईयर। आप सपोज यू आर इन फ्रेशर, स्टार्टिंग टुडे, ओनली एक्सेल विथ प्रॉपर गाइडेंस, 30 लाख यस। 3 ईयर, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। सही करेक्ट से आप पढ़ेंगे, सही से आप कनेक्ट कर पाएंगे। करेक्ट सर, करेक्ट सर। और बाकी तो है, सास है, हम्म जावा है, डॉटनेट है, पाइथन है, लाखों टूल है। मार कितना पढ़ेंगे आप? पढ़ लिया सब, हम्म। सीसीएन है। हाँ, कितना पढ़ेंगे? बट पहले आपको एंट्री चाहिए। वी नीड टू प्रिपेयर दैट। यस सर, करेक्ट। ऑलराइट, आई थिंक व्हाट अदर थिंग्स वी नीड टू डिस्कस? बहुत लंबा हो गया आई थिंक। सारे तो हो गए सर, इसमें ही बातचीत में बहुत सारे हो गए सर। और क्या जो है है इसी। वो है, जो हाँ, प्रैक्टिकल है वही है सर, और उसमें छुपाने वाला बात कुछ नहीं है। मैंने और सबको मैंने जो एक भी सजेस्ट कर रहा हूँ, दो जो इवन वाचिंग वीडियो, डोंट हाइप कि ये वीडियो देख लिया, ये 30 लाख का पैकेज उसको मिल गया, ये पाइथन सर, पढ़ लिया और आर पढ़ लिया, सास पढ़ लिया। जो भी पढ़ना है अच्छा से पढ़ो। एग्जैक्टली ओके। सर, तो पर 30 लाख पैकेज पाने के लिए आपको उतना ही, आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हाँ, कि सर आप पढ़ा लिए तो हाँ मुझे जॉब मिल नहीं जाएगा, वैसा सिर्फ नहीं है। मेहनत भी काम नहीं करेगा। मेहनत होता तो मेहनत के साथ आपको थोड़ा बहुत एक ट्रिक है वो भी जानना जरूरी है, कि हाउ एग्जैक्टली यू गेट ए एग्जैक्टली थर्टी सर, लाख हाउ विल यस गेट, सम एग्जैक्टली सर। सम इफ यू आर फ्रेशर, इफ यू आर और सर डिमांडिंग 30 लाख, वो कोई नहीं सर देगा मैंने आपको। सर मैं वही बात बोल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि इतने पैकेज में कोई कुछ भी जॉब मिलता भी है। सच में मैं बोल रहा हूँ सर, प्रैक्टिकल थिंग है। आपको तो फाइव तो जब हंड्रेड मैंने परसेंट मिल गया था, करेक्ट? या 300 500% ये लोग में देखें, यार क्या बात कर रहे हैं सर, हमको तो 10% नहीं मिल रहा, आप क्या पुराना बात कर रहे हैं? आज का करेक्ट डेट में करेक्ट भी सर। टुडे इवन टू पीपल गॉट अ वर्ल्ड टू बिगेस्ट एमएनसी, इवन दे गॉट 150% हाइक। यस सर। मेरा तो अभी सर एक उस स्टूडेंट। टाइम में आपने, मुझे याद है उस टाइम में आपने वही बोला था कि जब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप कुछ ध्यान में पढ़ लो और बेसिक्स क्लियर हो जाए, अगर बेसिक आपका स्ट्रांग है तो यू कैन क्रैक एनी जॉब। सेकेंड थिंग, और पैकेज के रिलेटेड वो भी आपने पूरा सारे ट्रेनिंग में, जैसे कि आपका मैंने ये भी एक अच्छा, मुझे मेरे मेरे लिए हुआ ड्यूरिंग दैट कोर्स, एक मॉक इंटरव्यू भी हुआ, ग्रुप डिस्कशन भी हुआ, तो उससे मुझे और भी फायदा हुआ कि थोड़ा और भी मुझे हर चीज में मुझे नॉलेज आ गया। मॉक इंटरव्यू के वजह से मुझे और भी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं एक मॉक इंटरव्यू दे रहा हूँ, और इट्स काइंड ऑफ रियल रियल इंटरव्यू, लाइक हर टेक्निकल क्वेश्चंस जो आपने पूछा थे मुझे मॉक इंटरव्यू, मुझे अभी भी याद है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इनटू द रियल मैं बोल रियल रहा हूँ ना, इंटरव्यू। हमेशा मैं डे वन से बोलता हूँ, दिस इज योर लास्ट कोर्स, यू शुड फोकस। बहुत सारा बच्चे भी यस। ऐसे आते हैं, यार जंप कर लिया कोर्स में। जंप करने से पहले आपको माइंड सेट को होना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली। जा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू मेक ए कैरियर। ओके, यस करेक्ट सर। आई वॉन्ट अ कैरियर। आपको ना 3 दिन का क्लास, 2 दिन का प्रैक्टिस है, दैट इज सफिशिएंट। यस इससे सर, ज्यादा सफिशिएंट। नहीं चाहिए, वो ज्यादा है। बहुत सारा स्टूडेंट हमारा बोलते हैं कि सर आई अटेंडेड टुडे, वो यू नो वालमार्ट कंपनी, मेरा 2 3 स्टूडेंट ऐसे थे, और वो केपीएमजी, दे आर टेलिंग यू आर लाइक ओवर स्किल्ड, मतलब ज्यादा स्किल है आपके पास। डिपेंडिंग कंपनी टू कंपनी, काल कोई आके बोलेगा यस कि यस। हमारा भी स्किल कम हो सकता है, हम किसी को ऐसा बोल भी नहीं सकते। डिपेंडिंग, बट आउट ऑफ 10 जॉब, 9 जॉब आवर स्किल्स इज फिट फॉर यस, एनी कंपनी। एनी एक कंपनी, कंपनी करेक्ट ठीक है, मैंने छोड़ दिया सर। 1%, आउट ऑफ 100%, 98% कंपनी, जो भी कंपनी दुनिया में जाएंगे ना, हमारा स्किल्स मैच करेगा, आउट ऑफ 10 से 9 मैच करेगा। करेक्ट सर, ये करेक्ट सर। ये होता है। और आज आज का डेट में देखो, मैं बात कर रहा था कि आज का डेट में भी इनको एक फ्रेशर है, देखो, कैन यू सी द स्क्रीन आई एम शेयरिंग? वो मिथिलेश करके है, वी आर एक्साइटेड सेलिब्रेटिंग, मैसेज किया था सर, आई आई गॉट ए जॉब। सो हाँ, सो ही मैसेजिंग की सर आई गॉट ए जॉब इन दैट मैं कंपनी सर सो। हमेशा आपका वो, मैं आप पोस्ट करते हो देखता हूँ, अच्छा लगता है कि कोई जॉब किसी को मिल जाता है, कोई किसी का कैरियर गैप है, किसी का
कोई नॉन टेक्निकल से टेक्निकल आ रहा है, कोई किसी का दूसरे बैकग्राउंड से आ रहा है। अच्छा लग रहा है सर। जैसे कि लाइक मैं भी सर ये बता पा रहा हूँ कि मैं पूरा टोटली नॉन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो उससे मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे कितना खुशी हुआ मेरे फैमिली को। लाइक बहुत सारे तो होप ही छोड़ दिए थे, मतलब फैमिली में भी कभी कभी बोल रहे थे हो गया, अब देखो मतलब और तुझे कुछ कोर्स करना चाहिए क्या नहीं। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे, अभी मैंने जितना पढ़ा है अगर उसी को ही मैं फोकस करके रखूं, उसी से ही अगर चलूं तो ऑब्वियसली आई कैन क्रैक ए जॉब। अरे बस आपने समटाइम्स सर ना जैसे बोल कुछ वही बच्चे बोला ना कि हिम्मत हिम्मत थोड़ा मतलब 4 महीना अटेंड कर होता लिया, है सर, सॉरी 1 महीना होगा अटेंड कर होगा लिया। ऑब्वियसली, आ, क्योंकि सर एक प्रेशर रहता है। सो सो फ्रैंकली स्पीकिंग सर, लाइक उस टाइम में मेरा एक छोटा सा बच्चा था। लाइक जब मैंने 2022 अगस्त में हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, और उसके तुरंत बाद ही मैंने रिजाइन डाल दिया, क्योंकि मुझे और भी ग्रूम करना था और भी इम्प्रूव करना था, मेरे जितने भी स्किल्स पड़े थे। तो उसी वजह से मैंने रिजाइन भी डाल दिया। तो एक फैमिली का प्रेशर भी आ गया उस टाइम में कि फैमिली कैसे चलेगा, फिर पेरेंट्स भी स्ट्रेस में आ गए कि तू क्यों जॉब छोड़ दिया, यू शुड बी इन अ जॉब। लाइक नहीं तो फैमिली कैसे चलेगा, फैमिली सपोर्ट्स अ लॉट इन ऑन ड्यूरिंग दैट मेरे को पीरियड याद आल्सो। है आप उस दिन बोल रहे थे कि सर मतलब एक टाइम था कि जहाँ पे रेंट के लिए भी आपका लाइफ में चैलेंज था एक। बहुत ओके, बहुत सारे थे। चैलेंज था बहुत आज का बहुत सारे डेट में। बहुत सारे चैलेंज था। मतलब वो जो 6 महीने जिसके ऊपर से गया हुआ है उसको ही वो पता पता है है, क्या है। बट एक एग्जैक्टली। चीज ये चैलेंज था, बट नो सर डाउट। उस टाइम में मेरा माइंडसेट ये था कि नहीं, मैं क्रैक कर पाऊंगा। आई दैट ट्रस्ट, और आपका वही फर्स्ट डे वाला जो आपने बताया था कि ट्रस्ट ऑन मी, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, यू विल क्रैक ए जॉब। सो सेम पॉइंट, सेम ही सबसे वही बड़ा है वर्ड मेरे ट्रस्ट। दिमाग। ये आज का यस डेट सर, में करेक्ट सर। ये ट्रस्ट योर सेल्फ, लाइक बी ए कॉन्फिडेंट कि ठीक है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। यस, क्योंकि देखो होगा। ना, देखो एक टाइम थोड़ा थोड़ा लगेगा कंपेयर लेकिन करो, आपने होगा ही होगा। एक इंजीनियरिंग पढ़ाई किया था, 10 साल आपने काम किया, 8 साल, 8 साल के बाद भी ना आपको रेंट देने के लिए, सरवाइव करने के लिए मुश्किल हो रहा था। आज का डेट में आप देखो, बैंगलोर में उतना बड़ा कंपनी में यू आर पेइंग, गिविंग हाई रेंट, इन सेम टाइम योर बच्चा अच्छा स्कूल जा रहा है, आप भी अच्छा करेक्ट लाइफ। सर। और ये कितना टाइम, मे बी कंसिडर 1 ईयर, अनदर 4 मंथ कोर्स, मे बी अनदर 4 मंथ यू प्रिपेयर को एक, जहाँ पे आईआईटी लोग काम करें जितना पैकेज नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा पैकेज आपको मिल रहा है। ये सबसे बड़ा बात है, तो इसको पाने के लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए। ये कोई ऑब्वियसली। नहीं कि फैक्ट्री का जॉब है डाल दो मेरे को, और ठीक है डाल सकते हैं उसे कोई ऑर्डिनरी जॉब में, कैसे ग्रो करेंगे फिर 1 साल के बाद क्या करेंगे आप। तो इसीलिए ये जो मैं आपको मैसेज दिखा रहा था कि एक मैसेज स्टूडेंट था, देखो आज ही मैसेज, आज का डेट, आज डेट 18 जनवरी। गुड मॉर्निंग सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, गॉट अपॉर्चुनिटी, दिस इज साइंटिफिक, थैंक यू फॉर गाइडेंस, ब्ला ब्ला। ये देखो 14 LP डेटा इंजीनियरिंग रोल है, इतना बड़ा कंपनी में उनको मिला है। मतलब थोड़ा टाइम लगता है, ये एंट्री फ्रेशर है, ये ही इज ओह ए फ्रेशर। ग्रेट। ओके, 14 LP डेटा इंजीनियरिंग, सेम कोर्स, वी डोंट हैव एनी अदर कोर्स। हमारा एक ही कोर्स है, मास्टर इन डेटा एनालिटिक्स। ही गॉट व्हिच रोल, डेटा इंजीनियरिंग रोल, 14 पे। यू आर लाइक इनिशियली वर्किंग इन डेटा एनालिटिक्स, नाउ डेटा गवर्नेंस। We have only one course, master in data, and there we cover everything. Most of students thinking, okay, can I join data analysis course, data science, data business analysis, data we are telling it's a one course, वन cover कोर्स, करेक्ट सर। everything. So एवरीथिंग, यस सर। yeah, people are thinking, sir, these are the not like ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम, कितना आप पढ़ेंगे। अभी क्या चाहिए आपको, पहले आपको एंट्री करना है कहाँ पे। 14 लाख का पैकेज देखो, आपका देखो 20+ लाख का पैकेज देखो, जितना भी पैकेज जितना लोग को मिल रहा है, पहले एंट्री कर लो एक अच्छा कंपनी में, अच्छा जॉब ले लो, उसके बाद यू विल गेट आइडिया। ये यस, सबसे बड़ा करेक्ट सर। बात है कि मैं पढ़ लूंगा फ्यूचर में, क्या फ्यूचर में कुछ काम नहीं आने वाला है। बीटेक पढ़ रहा था, यू फिनिश बीटेक, व्हाट यू लर्न, इवन 48 सब्जेक्ट है, क्या काम कर, कुछ भी नहीं है। कुछ तो नहीं, पहले आपको एंट्री कुछ हो नहीं। जाए, और सबसे बड़ा बात है, इफ यू गो टू एनी कंपनी इन द वर्ल्ड, ओके, they are giving quarterly training is there, on job training, यस, they must have to केपीआई इज finish. देयर, KPI is there, you must नॉलेज have to finish. प्रोसेसिंग। मेरा यस सर। कंपनी में क्या होता है पता है, हर मंथ में आपको एक ट्रेनिंग फिनिश करना है, हर क्वार्टर में तीन यस सर। कोर्स फिनिश करना है।
और उसमें एक प्रायोरिटी कोर्स होता है, एक मतलब एक्स्ट्रा कोर्स। प्रायोरिटी इन द सेंस लाइक आई एम वर्किंग डेटा गवर्नेंस, आई नीड टू फिनिश इन डेटा लिनेज पार्ट और डेटा Yes, प्राइवेसी। ये मैंडेटरी है, yes, एडिशनली आपको भी करना पड़ेगा। इवन द बेस्ट थिंग अबाउट कंपनी पेइंग फॉर दैट, आपको कुछ yes, नहीं sir. करना Correct, है sir. बस। बट आज का बच्चे क्या बोल रहे हैं कि यार आई विल फिनिश, सब कुछ कवर कर लूंगा, जाके ज्वाइन कर लूंगा, ज्वाइन करने के बाद आपको मानेगा यार मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो बेस्ट यही है कि पहले रेडी हो जाओ कि आपको अभी सामने को Yes, सरवाइव करने के लिए। उसके yes. बाद सब कुछ है, कंपनी के अंदर सब कुछ है। Correct, correct, sir. ऑलराइट, you done your lunch? Yeah. No, not yet, sir. Yeah, it's I think it's at 2 o'clock. We need to Yeah, go. yeah, Uh, yeah. your son and your wife is waiting, maybe. Okay, go. Enjoy your weekend. Uh, Yeah, thank you, sir. thank you, अच्छा Arvind. लगा सर, Thanks for बहुत it. दिनों के बाद, शायद दो Finally. साल के बाद Uh, 2 साल के बाद हम लोग नहीं, बात मेरा कर रहे हैं। बहुत सारा स्टूडेंट फोन करते हैं कि सर हम बात करना चाहते हैं, मीट करना चाहते हैं, क्या करना है। मैं भी नहीं, वर्किंग ऐसे तो प्रोफेशनल हूँ। वैसे तो आपके साथ थोड़ा बहुत 1-2 मिनट के लिए बात होता है फोन पे, लेकिन इतना एक लंबा सा कन्वर्सेशन कभी भी नहीं हाँ। हुआ। तो जब अच्छा लगा आपसे सर शुरू बहुत। हुआ न्यू ईयर के टाइम में, बहुत सारे लोग से मिले थे हम लोग दिसंबर महीने में। हम्म, अभी तो हम्म, टाइम नहीं हम्म, मिलता है इतना बात करने के लिए, क्योंकि बात कर सकते हैं, ये यहाँ पे बात करेंगे तो और बहुत सारा कुछ छूट जाएगा। जैसे खाना छूट गया, अभी लंच का टाइम ओवर हो गया। अभी 4 बजे फिर मेरे को जॉगिंग करना है जाके 1 घंटा, तो कैसे भी हेल्थ तो पहला बात है, हेल्थ हाँ, इज फर्स्ट डेफिनेटली थिंग। सर। उसके बाद रिमेनिंग जो भी होता है, उसके बाद फिर क्लास भी होगा इवनिंग, आज सैटरडे। फिर मंडे हो जाएगा तो हम्म, ऑफिस है, घर है, फैमिली है। ऑफिस। तो उतना का बीच में बस समटाइम्स सम पीपल आर थिंकिंग सर, कॉल करता हूँ तो हाँ, फोन कोई कोई नहीं उठाता है। डेटा ज्ञान ऑल द फैकल्टी, दे ऑल आर वर्किंग, ऑल आर टीचिंग, ऑल आर टेकिंग द फोन। सो समटाइम्स आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लाखों इंस्टीट्यूट या, है, हम हमेशा बोलते हैं कि एक ही डायलॉग देते हैं कि हम नहीं उठा रहे तो लाखों इंस्टीट्यूट है, जाके बात कर सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि हम कुछ यहाँ पे मतलब ऐसा है। बट यस, ड्रॉप ए मैसेज, बेटर आइडिया टू ड्रॉप ए व्हाट्सएप मैसेज, डेफिनेटली हम यस। कम बैक। ओके, हम्म, ऑलराइट, हम फिर मिलेंगे, या, बात करेंगे। श्योर ओके, श्योर थैंक्स श्योर सर, थैंक्स अरविंद, डेफिनेटली। थैंक्स थैंक यू, फॉर योर टाइम। थैंक यू या। सर। बाय।